जी आरती ले लीजिए। नमस्ते, सत श्री अकाल। गुरु जी, साध संगत जी, जी आया नु। ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨ ਆਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਨ ਲਾਗੋ ਪਾਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਨ ਉਪਜੇ, ਭਾਵੇਂ 100 ਗੇੜਾ ਆਓ ਜਾਓ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਮਿਲੇ, ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਓ। ਏ ਮਨ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਜ, ਲੈ ਜਿਤ ਸੇਵੀਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਹਿਸਾ ਮੂਲ ਨ ਹੋਵੇ, ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਚਲਾਏ। ਵਿਆਖਿਆ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸ 100 ਵਾਰੀ ਆਏ ਜਾਏ। हे ਨਾਨਕ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। हे ਮੇਰੇ ਮਨ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਜ ਕੇ ਲੱਭ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਤੇਰੀ हमें सड़ जाए। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने हमें अपनी चरण शरण में रखा हुआ है। ये आप ही जानते हैं कि आप हम पर कितनी कृपा बरसा रहे हैं और हम शब्दों में आपका शुक्राना नहीं कर सकते। हुक्मनामे में जैसा कहा है कि हमारी हमें, हमारी ईगो वो सड़ जाए, यही हम आपसे अरदास करते हैं, क्योंकि हम मूर्ख और आप हमें सुधारने ताड़ने आए। आप ही की कृपा है कि हम संगत के साथ मिलके नाम ले सकते हैं। आपका गुणगान सुनना हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है गुरु साहब। और आज आपने इस ब्लेसिंग्स में हमारे साथ नीना आंटी को भेजा है। एंड आई थिंक शी इज नॉट देयर राइट नाउ, मे बी शी इज ड्रॉप्ड ऑफ। तो आप जब चाहोगे शी विल ज्वाइन। एंड आज इतने प्यारी गुरु साहब हमें गाइडेंस दे रहे थे इन द, आई थिंक शी इज ज्वाइन बैक, कि नित्यनेम व्याख्या में कितने प्यार से समझाए कि सुबह ये करो, शाम को ये करो, सिर्फ मंत्र जाप ही कर लो। तो शुक्राना है गुरु साहब का। आंटी इज ज्वाइन बैक। सो गुरु साहब की वजाई करने के लिए आज गुरु साहब ने नीना आंटी को हमारे बीच में भेजा है। तो आंटी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और गुरु साहब का गुणगान हम सबको सुनाएं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी, am I audible? हाँ जी आंटी, you're audible. थैंक यू। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका, थैंक यू सो मच। अभी आरती के टाइम पर जस्ट फॉर अ सेकेंड I was just putting the volume up and my hand got click on that and the phone got shut off. तो मैंने कहा गुरु जी अभी तो एक सेकंड में बस आपसे अरदास कर रही थी और एक सेकंड में फोन बंद हो गया। What happened? So I'm so sorry संगत जी for that. शुक्राना गुरु जी। Thank you Subodh uncle. Thank you Anu auntie. It's a really blessing that Guruji had gave me this opportunity again on this platform to share my journey. And Guruji say, I don't know what to say, because just 2 weeks back, I was just listening Guruji's Satsang on the Zoom platform from Bada Mandir. And I was telling Guruji, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि पुरानी संगत से हमें इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। आप इतनी ब्लेसिंग्स हम सबको दे रहे हैं। तो मेरे मन में आया, मैंने कहा गुरुजी पता नहीं हम नई संगत को भी ये मौका मिलेगा कभी आपके गुणगान करने का। तो संगत जी, यू वोंट बिलीव कि मैं दिस इज लाइक 2 weeks बिफोर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, or maybe week and a half ago, I think it's last Friday, and I was thinking about this, like I think Tuesday or Wednesday last week, and when on Friday I see the message from Subodh uncle that auntie we would like
you to share the your journey with Guruji Maharaj. And I was like, I cannot even explain that moment. मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी आपसे बस मन में एक सोचना भी हम लोगों के लिए ऐसे लगता है only one thought comes and how you fulfill हमारी डिजायर आप कैसे अपनी संगत की फुलफिल करते हैं मतलब वी कैन नॉट इवन थिंक दैट हाउ गुरुजी डज दैट संगत जी आज सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूंगी अपना सत्संग अपनी जर्नी जो है वो मैं गुरुजी के आज शुक्राने से शुरू करूंगी December 14 last year just 2021 me and my family we all went to see the Christmas show. We are in Dallas here now. I moved in last May and from New York. After living in New York after 34 years, Guruji brought us over here. We are settling down in Dallas. And since May, when we came, because of the pandemic, we did not even try to go any places where is lots of people. We are trying to not to involve ourselves in places where we have which is we have to be very careful and all that because of the pandemic. And we do have 2 little kids in the house, so we are very careful. The kids are very careful about this, so I did not go anywhere. But in September my daughter, she said ki mom, I think I am going to book the tickets for because Christmas is coming, and in December we'll take the kids for the light show. So, and I said, okay, that's fine. I said, kids, बच्चे कहीं जा नहीं रहे हैं, सारा दिन काम में busy रहते हैं. Weekend comes, weekend goes. Okay, they want to go enjoy it a little bit, and we'll go. And it's from May to December. Of course, we go out, but only for our house things, what we do. And we went there. It was a beautiful. We had dinner together. My daughter, her in-laws, her father-in-law and mother-in-law, they are also here. They came for her daughter, little baby's first birthday. So they both came in November and they stayed with us. And in December, we all went together. Now, Sangatji, we are all together, I think 9, and if I'm not mistaken, 5, and then, yes. So we are like 9 people, including those 2 kids. We went, we enjoyed it. We came back home. Sunday passed, Monday passed. Monday night, I started feeling little my throat itchy. Tuesday came, my body started aching. And my daughter-in-law also started coughing. Now we are not thinking, we know it's pandemic, there's a COVID going on. I don't know how Guruji is not putting this thing in our mind that we should go check it out, because it did not come in our mind at all. She's coughing and she said, oh, raat ko bahut thanda tha, maybe mom, that's why it was cold. And maybe I said, yeah, that looked like, I think that's what happened. Sangat ji, Wednesday, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लग गई. And my body ache was very, very bad. And I'm thinking, okay, बहुत ठंड लग गई है मुझे और ये तो, weakness हो गई है. Because every year when the weather changes, I do feel little, cold and all that. So I thought that's what is happening. But body ache was very, very bad. I lay down in the bed. Now my daughter-in-law got sick. I got sick. My son, he was okay, but he had a little sinus, little headaches, but not body ache, not throat itching, no coughing, nothing. He was
fine. He was working, but he was little here and there said, oh, I have a little sinus. My head is a little heavy. Now, my daughter, when we spoke to, she called and she found out that me and my daughter-in-law, we are sick. She said, yeah, my mother-in-law, father-in-law is not feeling good either. They are having the same symptoms. She knew it can, my son, but they are not telling us. And मेरे mind में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है. All I am doing is जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय. And गुरु जी मेरे बिल्कुल भी दिमाग में ये नहीं डाल रहे हैं कि ये कोविड है. And it is a common sense of my side कि it is COVID. But मेरे वो thought आ ही नहीं रहा मेरे मन में. And okay, तो उसके घर में भी सारे sick हो गए. Her husband was okay. She was started getting the symptom also. Now she have a 1-year-old baby. My son have a 5-year-old son. And we all got sick. Only the boys are okay and the babies are okay. And Sangat ji, it was bad. It was bad. And I felt I'm the only one who was feeling more achy and more down, no energy, nothing. And Thursday morning when I got up, Guruji ne uthaya, I went to the bathroom, started brushing my teeth, and I suddenly felt that I'm going to pass out. And मेरे में मन में आ रहा है कि नहीं, मुझे बाहर आना चाहिए, बच्चों का दरवाजा नॉक करना चाहिए because I don't want to fall in the bathroom. I am going to get more hurt. I go to my son's knock on his door, and he got up, and my daughter-in-law got up, and she said, Mom, what happened? She's coughing a lot. My son hold me. And उसके दरवाजे पे ही जब आप में खड़े होते हो तो मेरे गुरुजी का जो स्वरूप है वो बिल्कुल उसके दरवाजे से सामने नजर आता है. And I sat down, and all I said to my daughter-in-law कि somebody have to get me an orange juice. And I'm looking at गुरुजी स्वरूप और मैं हाथ जोड़ के वहीं बैठ गई और मैंने उनको बोला, गुरुजी आप मुझे यहाँ लेके आए हो. मुझे नहीं मालूम मुझे क्या हो रहा है. आप सिर्फ आप ही ये कर सकती हो, ये घर में क्या हो रहा है. एंड आप मुझे यहाँ लेके आए हो. आप इसलिए लेके आए हो मुझे कि घर बिखर जाएगा, बच्चे बहुत परेशान हो जाएंगे. गुरुजी मेहर करो. एंड व्हाइल आई एम प्रेइंग दिस, मेरे मन में संगत जी, ब्यूटीफुल गुरुजी की संगत सबीना खोचर आंटी का एक सत्संग मेरे मन में आ रहा है. उसी टाइम पे आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग ड्राउजी, आई एम फीलिंग लाइक आई हैव नो एनर्जी. एंड मेरे मन में वो सत्संग आ रहा है कि जैसे गुरुजी मुझे वो याद करा रहे हैं कि कोई काम नहीं आएगा सिवाय मेरे. कोई भी तेरे काम नहीं आएगा सिवाय मेरे. एंड संगत जी, उसके बाद I got up, I went to the bedroom. Next day I felt little better. और मैंने उस चीज को सोचा तो मेरे दिमाग में यही थॉट आता रहा कि घर में हमारे सारा परिवार है, सब है. पर जब गुरुजी घर में बैठे हैं तो गुरुजी ही सबको संभाल रहे हैं, सबको संभाल रहे हैं. एंड गुरुजी ने उस टाइम पे मेरे देन सेकंड थॉट के कि मेरे को कहते हैं, जैसे कह रहे हैं कि तू उठ और काढ़ा बना. संगत जी, नाउ आई टेल यू कि मैंने जिंदगी में कभी काढ़ा नहीं बनाया. आई नेवर, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने कभी बनाया ही नहीं. आई नो काढ़ा मेरे को मालूम है, भी सुना है, कभी मेरी मदर कभी बनाती थी तो मैंने कभी देखा नहीं उनको बनाते हुए. हाँ, कभी वो पिलाती भी थी सर्दियों में या कुछ था ऐसे मतलब कोल्ड हो तो, बट मैंने अपने हाथों से कभी नहीं बनाया. ऑल दीज इयर्स आई बीन मैरिड, बच्चे हुए सब, आई नेवर मेड काढ़ा. नाउ 2 हफ्ते पहले, इससे 3 हफ्ते पहले, वी वेंट फॉर इंडियन ग्रोसरी. एंड मैं एक आयल में हूँ जहाँ पे सारे काढ़े का सामान है, सारा सामान वहां पर है, हम अपने घरों में रोज यूज करते हैं उसको. एंड my daughter-in-law is with me. We are both shopping, and I am picking up this सूखी वाली जो हल्दी आती है, ड्राई हल्दी.
I picked up that packet. I picked up the elaichi. I picked up the cinnamon stick. I picked up the black whole pepper. So my daughter-in-law said, "Mom, I think we have still little package ना." तो मैंने कहा हाँ बेटा ऐसे करते हैं, we'll take it. Let's take it because हमें बहुत आना पड़ता है, almost hour की drive हो जाती है. So let's take it. फिर next time पे नहीं लेंगे तो घर में पड़े रहेंगे stock में. एंड संगत जी, गुरुजी ने मुझसे वो सारी काढ़े की चीजें सारी डलवा दी मेरी कार्ट में. नाउ आई गॉट अप दैट डे एंड मेरे से चला नहीं जा रहा है, बट देखो कैसे गुरु महाराज आपको हिम्मत देते हैं कि मैं उठी. आई वेंट डाउन स्टेयर्स, माई बेडरूम्स आर अपस्टेयर, आई गो डाउन स्टेयर्स, आई स्टार्टेड मेकिंग द काढ़ा. एंड गुरुजी मुझे जैसे कोई मुझे कह रहा है कि अब ये डाल दे, ये डाल दे, ये डाल दे, एंड आई मेड दैट काढ़ा एंड आई फिल्ड अप द barrel and we started drinking. And I sent the bottle to my daughter house also for her parents and so they can drink it too. Sangat ji, we drank that kaढ़a, I mean, I don't know, 3 times and 4 times, little, every single day. By Sunday, we were absolutely fine. We were absolutely fine. And looks like we got our energy back. And मैंने मन ही मन अपने मैंने कहा गुरुजी, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मेरे घर में सबसे बड़े हो, आपने मुझे गाइड किया, आपने हमें रास्ता दिखाया. बिकॉज संगत जी, आई वाज सेइंग कि गुरुजी अब तो कोई भी नहीं है यहाँ पर, नोबडी इज हियर टू हेल्प अस, हाउ दिस इज गोना हैपन, मेरे घर में तो सारे बीमार हो गए, हाउ वी गोना डू दिस, कैसे होगा. उन्होंने माई डॉटर इन लॉ यूज टू गेट अप इन द मॉर्निंग, शी यूज टू गो, वो जाके राइस बना देती थी, वो ऊपर आती थी अपने कमरे में जाती थी, देन आई यूज टू गो, देन आई यूज टू डू लिटिल बिट. एंड हाउ ही वाज गिविंग अस ऑल दिस एनर्जी. एंड नाउ माय डॉटर इज नॉट टेलिंग मी दैट शी आल्सो गॉट द कोविड. शी डिड नॉट टेल अस ताकि मॉम को और वरी नहीं हो जाए, तो she did not tell me. And last week when we were sitting together, she told me, "Mom, mine was very bad also. My body was, I never lay down like this, and this happened to me also, but I did not tell you guys because I didn't wanted you to worry about it." Now in between that, the Sunday we started feeling better, but Saturday she came and she brought the kid to check her. So she told my son Gautam, please check moms and see if they are positive, because she had the kids home. So when they checked me and my daughter-in-law, they all checked me and her, it showed positive. So my son, he was negative, and they took us to the urgent care. And when they checked us, they said, yes, you both are positive. Her in-laws were positive, we are positive. And while they were checking my vitals, and they are saying, oh, your oxygen level is fine, your blood pressure is fine, all your vitals are fine, it's very good. So अब संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, जितने दिन कोविड हम लोगों को रहा, गुरुजी ने हमारे माइंड में वो नहीं डाला, because otherwise we would have get very panic, very, because I am that type of a person, I would have get very panic. गुरुजी ने वो मेरे थॉट आने ही नहीं दिया. उन्होंने मुझे ठीक करके तो अर्जेंट केयर भेजा कि यू गो नाउ चेक इट आउट, इवन दो इट वाज पॉजिटिव. बट व्हेन संडे, मंडे, all next day we started getting better. And now in between, Sangaji, while we have a COVID in the house, the kids are there too. गुरुजी ने उनकी भी रक्षा की, उनको भी बिल्कुल ठीक ठाक रखा. My son's baby, who is 5 years old, he had that one day little fever, and I did the ardas, Guruji, please बच्चों को कुछ मत होने देना, बच्चों को मत होने देना, because we are all around each other, even though we are in the house separate room, but we still around each other. बच्चे हैं, वो इधर से उधर जा रहे हैं. मतलब उन्होंने ऐसा हाथ दे के रक्षा की है. इसके लिए मैं आज गुरुजी से बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ उनका. गुरुजी, थैंक यू. और सबीना आंटी का वो जो
सत्संग था कि और कोई काम नहीं आता, सिर्फ गुरु काम आता है। एंड दैट्स वेरी 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 ट्रू संगत जी। गुरु जी ने मुझे ये दिखाया और बताया कि यस, आई एम हेयर विद यू गाइस। सो शुक्राना गुरु महाराज जी का, बहुत बहुत शुक्राना। दूसरा सत्संग संगत जी मैं ये शेयर करना चाहूंगी। अ, अ, अभी ये भी रीसेंट सत्संग है। अभी लास्ट वीकेंड my daughter-in-law's cousin, she got married in New York, and of course, it's COVID going on. We were very confused. Should we go? Should we not go? Should we go? बच्चों ने tickets book करा ली. I supposed to fly with my daughter and my son-in-law with the baby. My son, my daughter-in-law, and his baby, they supposed to leave early. So वो हमसे एक दो दिन पहले निकल रहे थे, हम एक दो दिन बाद निकल रहे थे. तो and I'm very nervous. I told the kids कि I will see. अगर मुझे लगेगा कि I am feeling comfortable, then I will go. I know it's family event and all that. Everybody's expecting us to be there. But I just wanted to take precaution. और ये भी गुरुजी शायद मेरे मन में डाल रहे थे. तो आप देखिए, गुरुजी ने मेरे से सूटकेस बंद ही नहीं करवाया, मुझसे कोई कपड़ा ही नहीं निकलवाया, मैंने कुछ पैकिंग ही नहीं की. And the same thing with my daughter over there too. She was so busy. She did not pack anything. And she said, Mom, it will take one day. Now we will put everything and we will leave. ठीक है. एंड टाइम पे मैंने बच्चों को बोला, अपनी डॉटर इन लॉ और अपने सन को, कि आई थिंक आई एम नॉट गोना गो बिकॉज समथिंग आई एम फीलिंग इट लाइक आई एम नॉट गोना गो, आई एम गोना स्टे होम. सो बच्चों ने बोला ओके ठीक है मॉम, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, बिकॉज आई नो द नंबर्स आर इंक्रीजिंग इन न्यूयॉर्क ऑल्सो. आई डोंट वांट टू टेक अ चांस. I even though everybody is telling me no, you're not gonna get it back again and all that, but I don't know what happened. I was keep saying no, I am not gonna take a chance. So I did not go. Now 30 फर्स्ट जनवरी फर्स्ट जनवरी को डैलस के उस पे उन्होंने जूम किया, सत्संग था न्यू ईयर का. एंड आई सैट डाउन, आई अटेंडेड दैट सत्संग, एंड आई एम सिटिंग, एंड बिफोर माय सन टोल्ड मी, मॉम वी विल सी आल्सो, अगर फ्लाइट कैंसिल्स हो जाएंगी तो देन वी वोंट गो आल्सो. तो संगत जी आप देखिए, मुझे, मैं बैठी हूँ, सत्संग अटेंड कर रही हूँ और मैं गुरुजी के स्वरूप को देख रही हूँ और मेरे मन में भाव आ रहा है कि गुरुजी, अगर बच्चे भी जाते हैं तो वहाँ यू नो इट्स वेरी नंबर्स आर इंक्रीजिंग, आई विल बी वेरी वरिड कि बच्चे जाएंगे वहां पर. तो बच्चे तो कह रहे हैं कि फ्लाइट कैंसिल होगी तो वो नहीं जाएंगे. तो गुरुजी आप देख लो, अगर फ्लाइट कैंसिल होती है तो बच्चों की फ्लाइट कैंसिल करा दो तो वो ना जाए, बिकॉज आई एम लिटिल वरिंग अबाउट देम, बिकॉज बेबी भी जा रहा है साथ में. संगत जी, while I am praying this, उस सत्संग में राइट अवे शब्द चलना शुरू होता है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास. राइट अवे मुझे मेरी बात का जवाब मिला कि डोंट से नथिंग, I know everything and I will do everything. Do not say anything to me. ये अरदास मेरे मन में चल रही है और मेरे सामने राइट अवे वही शब्द आ रहा है, बिन बोले या सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास. I took my words back. I say, गुरुजी, जो आपको ठीक लगे आप वो करना. और मैं जानती हूँ अगर बच्चे जाएंगे तो आप उनके साथ जाओगे और आप ही ले जाओगे, आप ही वापस लेके आओगे. संगत जी, बच्चे ठीक ठाक गए, कोई मुश्किल नहीं हुई बच्चों को. फ्लाइट वाज पर वेरी कंफर्टेबल, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होकर घर आ गए. उन्होंने आके घर में 5 days का क्वारंटीन किया एंड एवरीथिंग गॉट बैक टू नॉर्मल. शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना इस चीज का. आप सब कुछ जानते हो. हम ह्यूमन बीइंग फिर भी अपने मन और अपने दिमाग के लॉजिक इतने लगाते हैं, इतने लगाते हैं
कि हम इतना सिमरन करते हैं आपका, फिर भी भूल जाते हैं कि करने वाले आप ही हो गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज का जो ये सत्संग है, अभी जो मैं आपसे शेयर करूंगी, दिस सत्संग आई हैव नेवर शेयर with nobody. It's my very personal satsang. Um, it's very emotional. It's very close to my heart. This is this satsang is about my husband. Jai Guruji. I have lost my husband in 2008. My husband was only 49 years old. 2007, he diagnosed with throat cancer. And October 2007, I think October में दिवाली थी, and I wanted him to go to the doctor, but he told me after Diwali we will go. Then he said, because I knew he's not feeling good and he's not eating properly, so I told him, I said, Sanjeev, his name was Sanjeev. Sanjeev, we have to go to the doctor, and he said, okay, after Diwali we will go. Then the kid's birthday came. My daughter's birthday come on 23rd October. My son's birthday come on 28th October. He told me, okay, Neena, we will go after बच्चों के बर्थडे के बाद चलेंगे. तो संगत जी, मैंने इंसिस्ट किया, बट ही said no, बच्चों के बर्थडे के बाद जाएंगे. I said okay. We went after that. Right away when we went to the doctor, of course, it was a bad news. Doctor told us that he had the 4th stage cancer, and right away you have to admit him in the hospital. And he was admitted in the hospital. My daughter was 16 years old. She was in high school. That was her last year in high school to get graduate in 2008. My son was in first year of college that time. And I was only here by myself, my kids, and my husband. And the kids did the schooling. They are born, raised here in America, and we've been here since 1987. So long time period. The kids grown up. Everything happened here, and now that year, 2008, Sanjeev's 50th birthday also was in July, and me and kids, we were, always talked about, you always, when you are in the family, आप बर्थडे बात करते हो, सब कुछ करते हो, तो बच्चे wanted to celebrate his 50th birthday in July. And my daughter Vasundhara, her high school was going to finish that year, so we were thinking, okay, graduation, birthday, everything, we will do it together. But होता वही है जो ईश्वर चाहता है, जो गुरुजी चाहते हैं. पर ऑफ कोर्स उस टाइम मैं गुरुजी के शरण में नहीं थी. बहुत पूजा पाठ करती थी, शुरू से ही करती हूँ, बचपन से ही करती आई हूँ. बहुत मंदिरों में भी गई, बहुत गुरुद्वारों में भी गई, साईं बाबा के भी गई. एंड आई वाज इस्कॉन हरे रामा हरे कृष्णा डिवोटी भी रह चुकी हूँ. आई डिड द बुद्धिस्ट चैंटिंग आल्सो. ऑल दिस जर्नी शायद पूरी हुई तो आके पूरन गुरु मुझे मिले. उन्होंने मुझे अपनी शरण में बुलाया. Now, Sanjeev was admitted in the hospital. पूरा घर, all we know कि how
इट फील्स कि जब घर में आपका हस्बैंड, बच्चों के फादर, दे गेट्स ही गेट्स सिक, हाउ पूरा घर आपका हिल जाता है. ऑफ कोर्स इट वाज टोटली शैटर्ड न्यूज़ फॉर अस. बच्चों के लिए, मेरे लिए, वी कुड नॉट बिलीव इट, बट ही डिड डायग्नोज विद 4th स्टेज कैंसर. बहुत बहुत टफ टाइम था. इट वाज वेरी वेरी टफ टाइम. बिफोर दैट I had lost the business. Sanjeev and me, we had the business. We lost that business. We lost all our money in the business. And I came to the point where I was in deep, dark tunnel. I didn't know what to do. But I had 2 kids, young kids. I had to be strong. I think I wasn't strong. Today I feel that there was a divine some power who was making me strong. And उनका इलाज शुरू हो गया. He was in New York, LIJ hospital. I was living in New York, in Franklin Square. मेरी जर्नी जो थी संगत जी वो शुरू हो गई from home to job, to drop the kids to the school, to college, go to work, come back, in between take a time off, go to the hospital, come back, go back to work, pick up my daughter from school, drop her home, go back, pick up my son from college, first year, because there was only one car. So I needed the car. He couldn't take the car. And back and forth, back and forth. It was going on 4 months. It was going on continuously. And it wasn't that I can leave my job and I can just go, because financially I needed the job. I had no choice but to do that. I went, whatever Guruji was giving me. Today, what I feel that he was there with me, giving me all this strength. Anyhow, it was very tough tunnel. I will not go in detail. While he was going in that process, in pain and all that, it was very, very hard to see my husband going through this, which was like, I could not picture that. I could not see him going through this. Such a handsome man, such a pure soul, helping nature. Anybody ask anything, he will do it. And he will do anything for his family. Brought me from India, marry me, and gave me everything in life, whatever I did not even imagine. And gave me all the sukh जो एक husband अपनी wife को दे सकता है, उन्होंने मुझे दिए. But of course, that was in his journey. He had to go through this. And I used to tell him that, संजीव, आप बहुत ज्यादा सबका करते हो, आप अपना नहीं सोचते हो. So he used to tell me, संगत जी, कि जब मेरा टाइम आएगा, then तुम सोचना. Then I will let you do everything when my time comes. And I said, what do you mean by that? He said, no, I'm just saying, मेरी लाइफ के कोई भी डिसीजन लेने होंगे, मैं तेरे को लेने दूंगा. तू चिंता नहीं कर. Sometimes when we say things, we don't pay attention. बाद में वो चीजें आपको रियलाइज कराती हैं कि ये इनका क्या मतलब था. संगत जी, वो February came, doctors told me that कि this is Passey, we just gonna let you know that he's not gonna make it. So we want you to be prepared. We want your family to be prepared for this. तो संगत जी, धीरे धीरे
I still could not resist this ki something is going to happen to him, because you don't think that, you do not even, it doesn't even come in your mind कि ये चीज मेरे दिमाग में तो बिल्कुल ही नहीं आई कि संजीव को मतलब कुछ हो सकता है ऐसे, बिकॉज एक इंसान जो भागता दौड़ता हर काम करता है, मतलब कैसे, हाउ इट्स पॉसिबल, ये क्या, मतलब व्हाट इज दिस हैपनिंग। मीन मेरे क्वेश्चंस जो थे ना वो इतने हो गए थे भगवान से कि मैं, all I used to say, why to us, we didn't do anything bad to anybody, why all we were doing it working, taking care of the family। हाँ, लॉस हुआ उनको बिजनेस में, बिजनेस लॉस हो गया, एंड आई हैड द हाउस आल्सो। अब सब कुछ संगत जी, इट वाज ऑल ऑन मी, डिडंट नो व्हाट टू डू कि कैसे कैसे होगा सब कुछ। जब डॉक्टर्स ने मुझे ये बोल दिया, सो आई केम होम एंड आई कॉल India. Of course, my mother-in-law came. She stayed with me, and she, उन्होंने इतनी पूजा पाठ किया, इतना पूजा पाठ किया कि वो मुझे कहती थी इसको कुछ नहीं होगा, इसको कुछ नहीं होगा। इस एंड ही वाज द ओनली सन एंड ही हैड वन सिस्टर, ही वाज द ओल्डर सन, कि तुम देखना संजीव को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एंड आई यूज्ड टू से यस मम्मी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। संगत जी, धीरे धीरे उन लोगों ने, हॉस्पिटल में सारी डॉक्टर्स की टीम ने मुझे बोला कि आप अपनी फैमिली को लेके आओ, वी हैव टू डू अ मीटिंग। वी वेंट, आई टुक द किड्स आल्सो विद मी, एंड वी ऑल सैट डाउन, डॉक्टर सैट डाउन। उन्होंने हम सबको क्लियरली बोल दिया कि आप, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, एनी टाइम, सो आप अपने अरेंजमेंट कर लीजिए। तो माय सन केम आउट, ही सेड हाउ कुड दे से लाइक दिस, बच्चे हैं, he was young, he did not expect this ki this is happening to my father। My daughter was shattered, she wasn't saying anything, but very quiet, बच्चे बहुत डिप्रेस हो गए। I came home, तो मैंने डॉक्टर से अलग से पूछा कि डॉक्टर, how long you telling me this for? They said any time, Mrs. Passey, I think you should make arrangement। And संगत जी, मैं गुरुजी के आगे बैठी हूँ, मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ, गुरुजी मुझे माफ कर देना, जो मैंने किया मैं नहीं जानती वो ठीक था या वो गलत था, पर मेरे पास कोई और चॉइस थी नहीं। संगत जी, मैं घर आ गई, वो रात में सोई नहीं, मैंने बहुत सोचा कि इट्स ओनली मी एंड माय किड्स हियर। मॉम संजीव की यहाँ है पर उनको तो कुछ पता नहीं है। Back home, my father-in-law was sick, he couldn't come. My sister-in-law was taking care of him. My brother-in-law, my sister husband, he got shattered because Sanjeev was his childhood best friend, and my sister got married to him, and they were brother-in-laws. They were very, very close to each other. They used to be like real brothers. He got very, very shattered. He got depressed. He could not come. It was only me and my two kids, and I had to make all the decisions. And now I remind this what Sanjeev told me कि मेरी लाइफ के सारे डिसीजंस तू लेगी। संगत जी, वो चीज मेरे माइंड में आई, एंड व्हेन डॉक्टर टोल्ड मी कि आप अरेंजमेंट कर लो, तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट अरेंजमेंट यू आर टेलिंग मी, व्हाट अरेंजमेंट यू वांट मी टू डू। ही सेड if something happens to him any minute, we want you, you know, of course, the body and all that, all whatever your tradition is, whatever your rituals are, you get ready for that. Now, Sangat ji, I pray to Guruji
folded hands and Guruji, मैं प्रे करती हूँ कि आप कभी भी किसी भी लड़की को जिंदगी में कभी भी ये दिन मत दिखाना कि उसको अपने हस्बैंड के लिए उनके जाने से पहले सारी चीजें अरेंज करनी पड़ जाएं। गुरुजी प्लीज, दिल से मैं ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, ये कभी किसी के साथ ना हो। I called next morning one Pandit ji, and Pandit ji asked me कि डेथ कब हुई है। मैंने पंडित जी को बोला, पंडित जी अभी डेथ नहीं हुई है। वो कहते हैं कि तो आप माता जी, आप मुझे ना बाद में फोन करना, आप मुझे अभी मत बोलो। आप मुझे जब फोन करोगे तो आप, मैं जो कहोगे मैं करूंगा। संगत जी, now I don't know about the funeral home. Where I used to work, my boss, they were the Italian company. It's a corporation. I used to work for them. And of course, he was an angel. Guruji sent him an angel. He used to ask me how my husband is doing all the time. And he used to let me go in my lunchtime. He used to let me go for a couple of hours to the hospital. And he was very, very generous. And he asked me, and I told him, yes, the doctor told me that anytime anything can happen, but and they're telling me to do the arrangements. And I don't know any funeral homes here. I don't know. He said, okay, I know somebody, and you come with me. We went. He knew. He took me there. The person over there, very nice guy also. They're known to them, each other. And he's in Long Island and the Chamber of Commerce also. They are all involved in there. And he told me that, okay, he put a one um, album in front of me, and he told me ki, Neena, these are the coffins, and these are the inside the color of the bedding which we put, and you pick the color, what color you want to do it. Sangaji, that was the worst day in my life, in this time life, that I had to pick a color of the bedding in for coffin for my husband. That was the worst day in my life. And I am telling him, now my state of mind, I don't know where it was. What I was doing, how I was doing, I have no idea. My answer to him is, oh, my husband likes blue color. I think I'm gonna pick blue color. I'm sorry, Sakarji. I picked out everything for him before even he left this world. I never thought in my life I had to do this. But I didn't wanted my kids to see this. I didn't wanted to take my kids with me to do all these things. Because I was by myself with the kids. I knew if something happened,
what would they do with my husband's body? Where they would take him? I have to prepare everything so I can bring him back with. Everything got done. Everything got done. Now, 22nd February morning, he passed away. 21st February, uh, 20th February, he went in coma. And 21st, I see him little bit rolling his eyes, and he looked at my son and he told him to give him the water. My son got the water. I wish, Guruji, you were there, but I wish I had your jal prashad that time. Maybe I could have put that in his mouth and he would have been alive today. I wish you were there, Guruji. You could have saved him. I told my son, give him the water. He took the water and he went back in coma. 21st February, my son, it was a very, they were expecting very bad snowstorm. It was a blizzard, I think, that 21st February 2008. And my son told me, Mom, you guys go home. I'm going to stay with Dad tonight. I don't know what happened to me. And I told him, I said, no, Gautam, you take your grandmother and your daughter home. I will go drop you guys home because I needed the car. I will drop you guys home and I will come back. I want to stay with your dad tonight here. He said, you sure, Mom? If you need me, you tell me. Otherwise, we'll all stay. But we wasn't allowed to stay. But the nurses were very nice and they said, if they want to, they can, for a little bit, they can stay. And then, one person have to, sleep here if you want to sleep. So I told them, I said, no, they will go home. But they went home late that night. I dropped them. I think by 11 o'clock, I dropped them home in the night. I came back again to the hospital. I stayed there. Now, Sangatji, I am sitting on this chair, looking at him. And बाहर हॉस्पिटल के उनके रूम से जब मैं विंडो से बाहर देखती हूँ, इतना स्टॉर्म, स्नो स्टॉर्म कि जैसे आज ही एक रात है, इसमें सारी स्नो बस आज ही आएगी, इतना स्टॉर्म. एंड आई एम थिंकिंग कि बच्चे घर पे हैं. I spoke to them on the phone. They said we are going back to sleep now and all that. So I got a little satisfied. Spoke to my mother-in-law. Everything was fine. And I sat down on the chair. Now, Sangatji, around 4 o'clock, somebody wake me up. I don't know. I feel like I was sleeping. I fell to sleep. And I felt like Sanjeev shook me and telling me, go get the kids. Go bring the kids. I open my eyes. I see him sleeping. He's in coma. Who was that? I thought maybe I'm in my sleep. I got up and I went to out of his room and I said, okay, let me go downstairs. I went downstairs and I went to the main LIJ hospital, the main entrance. And I see the snow is like very bad snow outside. I can't go. My car is probably, all snowed and all that. I can't go. How I'm going to drive? I came back again. And I came back in the room again. I sat down on the chair. I slept again. क्योंकि इतने
रातों की नींद थी जो पूरी नहीं हो रही थी, तो मुझे पता ही नहीं लगा, मैं फिर सो गई. Again, I felt that somebody is shaking me and telling me, go bring the kids, go get the kids. Again, I got up and I said, how I'm gonna go? Suddenly, I don't know what happened. I came out from the hospital and I started walking towards to my car. My car was parked, I think, block and a half away from there, the hospital. Now, Sangaji, when I went to my car is all full with snow and it's freezing cold, February month. And now I can't open my car because it's all snowed. So I didn't have um, the scraper to scrape the ice from the windshield. I had a heavy jacket on. आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैंने अपनी जैकेट अपनी आर्म से उस गाड़ी की विंडशील्ड को क्लीन करना शुरू किया. And car started getting clean. It was icy. It was too much snow. When I'm telling you snow, it's blizzard. I had no shovel. I had no scraper. With my arm jacket on, I am cleaning the car in the front. Clean ho jaye. And I'm seeing I did it. Of course, it took me 10 minutes maybe. I did the back shield. I did the front one, side mirrors, and I started my car. And I started driving. Now, up to today, I do not understand and I don't get it. But of course, now गुरुजी के साथ हूं तो अपना लॉजिक ही नहीं लगाती मैं घर कैसे पहुंच गई मुझे पता ही नहीं लगा. All I remember कि मैंने गाड़ी साफ की थी. And all I remember that I was in front of my house. How I came. I came home. My mother-in-law was up and she said, everything is okay, Neena. I said, हाँ जी, सब ठीक है. उनको मैंने कुछ नहीं बताया. But in between, the nurse came to me and she told me, I think you should, because he was on the ventilator, you should take him off, Neena. Let him go. I told him, what do you mean, let him go? No, I don't want him to go. I keep telling her, don't tell me that. How I can let my husband go like this? No, he's not going. Don't, please, do not touch the ventilator. I keep telling her that. So, and my mom, when she asked me, mother-in-law, she asked me, कि सब ठीक है? मैंने कहा, हाँ जी, सब ठीक है. I went back to in my room and I see both kids are sleeping, brother sister दोनों सो गए इकट्ठे बहन भाई. तो मैं उनके साथ ही जाके लेट गई. And I'm thinking and मैं घर पहुंच गई, इतनी ठंड थी, कैसे आ गई घर, all these and कैसे होगा, all these, so many thoughts in my mind. Because you can understand, Sangat ji, how you can even function when so much going on in the house. अभी मैं लेटी उनके साथ तो मैं सो गई. Now 8:15 or 8, I think 8:15, 8:10 something, the phone rang. And nurse called me, the doctor called me and they told me, Mrs. Passey, you have to come right now. Please come right now. I said, what happened? They said, I think you guys should come here now. And I picked up the kid. I took the kids, my mother-in-law. I told them, let's go, fatafat. I knew it. Something was telling me, I knew it. And I took the kids, I drove. Now my son is looking for the parking. We couldn't find the parking. So I told him, okay, drop us right in front of the hospital. Just give the car to the guy and let him park. Give him the key to the valet park and just come upstairs. He said, okay, I'm coming. Me, my mother-in-law, my daughter, we went in the room. They told us that that's it. He have just couple of, couple minutes. So, and I'm telling my daughter to call your brother. Hurry up, hurry up. Sangaji, my son stepped in the room
we all put our hand in his chest. He was waiting for my son to come in. Three, my mother-in-law, all of us, we put our hand in his chest and he left. February 22nd, he left us. आज ये सत्संग मेरे से गुरुजी ने क्यों करवाया मैं नहीं जानती संगत जी, मैं नहीं जानती किसके लिए क्या आंसर होगा, मैं ये भी नहीं जानती, पर मेरे मन में आज गुरुजी ने ये डाला है कि आज ये सत्संग तू शेयर कर। बहुत पर्सनल था मेरा, बहुत इमोशनल है। हमारी he was everything to us, आज भी हैं। अगले महीने उनको ऑलमोस्ट 14 years हो जाएंगे, but he is every minute, every day he's still with us. उनके जाने के बाद गुरुजी 2015 में मैं गुरुजी से जुड़ गई। गुरुजी ने ले लिया मुझे अपनी शरण में। Of course, it was not easy. It was very, very hard life. It was, but गुरुजी ने मुझे और मेरे बच्चों को इकट्ठा रख के हम लोगों को इतनी शक्ति दी कि बच्चों की सारी पढ़ाइयां पूरी करवाई, उनकी शादियां करवाई, इतने अच्छे बच्चे आने वाली उनकी लाइफ में दिए, उनके स्पाउस, उनको आगे 2 छोटे बच्चे दिए। ये सब मेरे गुरु महाराज ने किया आके। और मेरे बेटे ने, जब उसका पहला बेटा जब बेबी हुआ, संगत जी, he born in LIJ, he born the same time the time my husband left, same hospital. He's supposed to be in the Winthrop, but ये भी एक सत्संग है, वो फिर कभी मैं शेयर करूंगी। एंड बच्चों ने, जब उनको पता लगा, जब उन्होंने चेकअप कराया था, then when they found out it's a boy, my daughter, my son both said, Mom, Dad is back, and my son named him Sanjeev. आज वो 5 साल का है। गुरुजी ने बहुत मेहर की है। My daughter have a baby girl. गुरुजी ने उसको भी, उसका भी एक सत्संग है। गुरुजी ने उसको भी दिवाली वाले दिन सुबह भेजा, बच्चों को बहुत अच्छी जॉब में सेटल कराया और हम लोगों को यहाँ डैलस में लाके इतने अच्छे तरीके से रखा, इतनी मेहरें बरसाई हैं कि मैं उसका बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं उनका शुक्राना करते थकती हूँ। मुझे ऐसे लगता है गुरुजी, ये शुक्राना वर्ड, एक जस्ट थैंक यू बोल देना भी आपके लिए इनफ नहीं है। मेरी डिक्शनरी में ये थैंक यू बोलना आपको इनफ नहीं है। आप, इस साल मैंने गुरुजी से और कुछ नहीं मांगा, गुरुजी से इतना मांगा, गुरुजी मुझे और सिमरन कराना और सत्संग सुनवाना, अपने चरणों से और ज्यादा जोड़ देना। और मैं आपसे आप कुछ नहीं मांगती हूँ, कुछ भी नहीं मांगती। और मैं जानती हूँ कि आप यहाँ बैठे हो और सारी संगत, गुरुजी की सारी संगत, हर घर में आप विराजमान हो। आप घर के सबसे बड़े आप हो, हर घर में, सब फैमिलीज में, बच्चों के लिए भी, हम माँ बाप के लिए भी सबसे बड़े आप हो। सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे तो हम कोई काम करेंगे गुरुजी। हमारे सिर पे जैसे बड़ों का हाथ रहता है, अब ऐसे आपका हाथ हम सबके सिर पे बना रहे। हमारे सिर से कभी भी अपना हाथ ना हटाना गुरुजी। आपसे और कुछ नहीं मांगती, सबको सेहत बख्शना गुरुजी, सारी संगत पे बहुत बहुत मेहर करना। 2 लाइनें जरूर बोलना चाहूंगी संगत जी।
जिंदगी दे मालिका, जिंदगी है तेरे नाम, तेरे बाजो जिंदगी बेखुश बेहाल, जिंदगी दे मालिका, करा तेरी पूजा, तनु मेरी छावा, तेरे नाल दाता खुशियां मनावा, तेथों दूर होके चला रहना है बेहाल, तेरे बाजो जिंदगी बेखुश बेहाल, जिंदगी दे मालिका। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो, मुझे माफ कर देना संगत जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुबोध अंकल। आई विल टेक अ विराम ओवर हियर। थैंक यू अनु आंटी। Thank you so much for giving me this blessed moment to share my journey, my blessings, गुरुजी की मेहरें आप सबके साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू संगत जी। बेहद शुक्राना गुरुजी महाराज। मरना सच, जीना झूठ, deep messages for all of us and souls they never go away। गुरु साहब ये हमें समझाते हैं, अगर हम बुक्स भी पढ़ें सरचार्ज विद डिवाइन लव में क्लियरली ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स के बारे में गुरु साहब समझाते हैं। बेहद शुक्राना गुरु जी का, वही जानते हैं वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, बट हम ये सब जानते हैं कि हमें हिम्मत वो देते हैं और हमारे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, शुक्राना गुरु जी। आपको पता है इससे भी बुरा हो सकता था पर आपने ये कर दिया। ये कौन कर सकता है? वो ही कर सकते हैं। हम उनके जानने से पहले डिफरेंट थे, उनके शरण में आने के बाद डिफरेंट है। ये उन्हीं की कृपा का प्रसाद है। गुरु साहब आप सबको ऐसे ही हिम्मत देते रहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन में आए हैं तो दुख सुख तो हैं, बस हमें उस एक रस में रहने की हिम्मत दें। आपको ना भूलें, क्योंकि एज आंटी सेड कोई कम नहीं होता, सिर्फ गुरु का मन है। थैंक यू गुरु साहब फॉर सेंडिंग आंटी टू शेयर हर ब्लेसिंग्स विद अस। संगत जी, अगर आज आपका बर्थडे है या आपके परिवार में किसी का भी बर्थडे है तो हम सब संगत परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। गुरु जी सर्वदा भला और हमें बख्श लो, हम बहुत पापी हैं, हमें अपने लायक बनाएं। संगत जी विल प्ले शुक्राना टू से थैंक यू टू गुरु जी महाराज कि वो हम सबको संगत करने का मौका देते हैं, क्योंकि संगत में ही गुरु बसते हैं। शुक्राना के बाद आप अपने आप को एडमिट करके आज्ञा ले सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। किस किस गल दा शुक्राना करा मैं गुरु जी। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਦਾ, ਐਨ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਰ ਉਠਾ ਕੇ ਜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਏ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਨ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਸੀ।
ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਸਤਸੰਗ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਸਾਹ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।